तो जी मेरा अभी स्टॉप आने वाला है। क्लोन में उतर के वहाँ से फिर बस में बैठना है। अभी मैं क्लोन पहुँचने वाली हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। गाइस मैं क्लोन तो पहुँच चुकी हूँ और अभी यहाँ से असल में जहाँ से बस चलनी है थोड़ा सा फासला है, यहाँ से पैदल जाना होगा। क्लोन में आई गई हूँ तो इस बहाने आपको आज एक क्लोन की जो सबसे फेमस चीज़ है जो यहाँ पे लोग नॉर्मली देखने आते हैं वो दिखा देती हूँ। तो ये है जी क्लोन का बहुत ही फेमस सा डोम, जिसको लोग एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से देखने आते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक्चुअली देखने वाली ही चीज़ है। इस टाइम तो खैर अंदर से ये बंद होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मली जितने भी लोगों का जो है ना स्टे होता है, लोग ज़रूर इधर एक दफ़ा क्लोन में उतर के डोम देखते हैं। ये वाकई बड़ा ही ज़बरदस्त है और दिन की इसकी अपनी लुक होती है। रात को भी प्यारा लग रहा है लेकिन दिन को और ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो जी आगे चलते हैं। अभी मैं असल में बस पे जाने से पहले बैंक की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है। वो ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी रास्ते में, तो पहले ज़रा पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बस की तरफ। हाँ जी, ये हमारा डॉइचे बैंक, जहाँ पे नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे बैंक अकाउंट होता है। जिसने भी नॉर्मली जर्मनी आना होता है, ये आने से पहले ही यहाँ पे अकाउंट हमारा खुल जाता होता है। तो आपके सारे पैसे इधर ही होते हैं नॉर्मली। तो यार मैं वैसे काफ़ी अरसे बाद रात को इतनी देर से निकली हूँ, क्योंकि शुरू में जब मैं जर्मनी आई थी तो उस टाइम पे मैंने डिफरेंट सिटीज़ में टेस्ट वगैरह देने जाना होता था, तो मैं अक्सर रात को 1 बजे 2 बजे निकलती होती थी। बट अभी काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद से, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी रात में निकलने की। लेकिन आज बस ये जो बेल्जियम का टूर है, इसकी वजह से आज काफ़ी रात को निकलना पड़ा है, क्योंकि बस जो है वो निकलेगी यहाँ से तकरीबन 2:30 बजे और पहुँचेगी ये ब्रजेस में पहुँचेगी ऑलमोस्ट सुबह के 9 बजे के बाद। ओहो बस भी नज़र आ गई। बस भी सामने खड़ी भी है, मास्क भी पहन लेना चाहिए। जी ये चेकिंग हो रही है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स और टिकट्स की। गाइस बस में मैं बैठ चुकी हूँ। सीट बिल्कुल फ्रंट वाली तो नहीं मिली, लेकिन शुक्र है ऊपर मिल गई है। ऊपर से व्यू ज़रा अच्छा आता है, ऊपर बंदा सही देख सकता है। अभी तो बाहर बिल्कुल अंधेरा है, बाहर कभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अभी ये सुबह पहुँच के आई थिंक बेल्जियम में जब पहुँच जाएगी जर्मनी क्रॉस करके, वहीं से फिर एक्चुअली सुबह जब स्टार्ट होगी तभी कुछ नज़र आना शुरू होगा। The next break is going to be soon for the washroom, and also I need to tell you that we are not allowed to eat inside this bus, and I have to tell you to fasten your seat belts please for your safety, and if the police catches us it's going to be 60 euros per person, and we don't want that really. And if you have any question, I'm downstairs. There are also 2 other girls, Martina and Gonja. Martina and Gonja, they are sitting next to me. If you have any questions, then please come down and tell us what you have in mind. You don't need to write this in the WhatsApp group. It's gonna be too many people will be bothered by a small question. आज बहुत दिनों बाद मैंने इंग्लिश सुनी है। जब से जर्मनी आए हैं ज़्यादातर जर्मन और फ़नी इंग्लिश बोली इसने काफ़ी। तो जी अभी यहाँ पे हमारी ब्रेक हुई है
जर्मनी में ही हैं अभी स्टिल हम, आखन में। और यहाँ की एक्चुअली मेरे सामने ही एक बहुत जो फेमस यूनिवर्सिटी में से एक है जर्मनी की, उसकी बिल्डिंग मेरे सामने है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इसके बाद फिर हम आगे बेल्जियम की तरफ चलेंगे। Break before we get to Belgium. We are in Belgium already, but to our first destination. So we have a break of 1 hour here. We start again at 7:30. सो बेल्जियम पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह का इस टाइम वक्त है 6:30 हो रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, 7:30 दोबारा बस चलेगी। अभी आगे ब्रजेस पहुंचने में स्टिल 4 घंटे। जी अब वापस बस की तरफ। तो गाइस बस दोबारा चल पड़ी है और ये भी जस्ट हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए गए हैं जहाँ पे एक्चुअली हम विज़िट करेंगे सिटी को। तो लेट्स सी। जी ये सुबह सुबह का वक्त है और हम ब्रजेस में इस टाइम पहुँचे हैं। दोनों बसेस आपको नज़र आ रही हैं, पिछली बस से मैं अभी उतरी हूँ। और पता नहीं ये जो टूर गाइड है अभी हमें क्या दिखाना चाह रही है, इसे सुबह सुबह बस से उतरवा दी है। I hope you all have your booklets with you. Yeah. You can open them now. It's funny, I guess. It's better than nothing, you know? But that's what I think. I'm not complaining. ब्रजेस में सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन जगह कमाल की है, देखने वाली है वाकई में। अभी ये झंडे वाली आंटी हमें आगे लेके जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स सी कहाँ जाते हैं और आगे क्या क्या है।
देख सकते हैं कि इतनी फॉग है, इतनी धुंध है कि वो जो ऊपर कैसल है वो नज़र भी नहीं आ रहा क्लियरली। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. गाइस अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है किल की, और अभी बस यहाँ से ब्रजेस से निकलने ही वाले हैं, ब्रसल्स की तरफ अब जाएंगे। अल्लाह करे बारिश रुक जाए ताकि ब्रसल्स में जो है थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। गाइस बारिश की वजह से ट्रिप थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। और आप लोग देख भी सकते हैं काफ़ी शीशे पे भी फॉग नज़र आ रही है। और वैसे अब फिर ब्रसल्स की तरफ आगे जा रहे हैं और
होप सो वहाँ तक पहुँचने तक बारिश रुक जाए तो थोड़ा वहाँ पे इंजॉय कर सकें। Them. These are very important right now for you. And we are going to park somewhere, and then I will walk you to the central station again. And the central station where I will walk you will also be the meeting point in the evening at 9:30. जी ये है ब्रसल्स का सेंट्रल स्टेशन। गाइस ब्रसल्स पहुंच चुके हैं अभी, और मेरा बिल्कुल भी वैसे बस से निकलने का मूड नहीं था क्योंकि पूरी रात ही सोई भी नहीं है, सारों को ही नींद आई हुई थी बस में। लेकिन फिर ड्राइवर ने आखिरकार निकाला सबको, उसने कहा कि ब्रसल्स पहुंच गए हैं और अब दिन भर घूमे फिरे यहाँ पे, रात को मिलेंगे। तो अभी पूरा दिन ब्रसल्स में ही है इधर। जगह ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत डिफरेंट है ब्रजेस से, लेकिन क्योंकि सिटी बड़ा है तो बड़ी मिक्सचर सा है एक किस्म का। मतलब न्यू चीज़ें भी हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उन्होंने सजावट बहुत नए तरीके से की हुई है और हर चीज़ है।
ऐसा झूला मैं पिंडी में लेती होती थी नवाज शरीफ पार्क में, कि वो छोटा सा था, ये तो बहुत बड़ा है, पर मैंने कहा ट्राई करते हैं। गाइस ब्रसेल्स में ढूंढ के एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला मुझे भी, सो मैंने कहा यहाँ पे ट्राई करते हैं। कलर तो बड़ा अजीब सा है चिकन टिक्का का, लेट्स ट्राई। सो गाइस जैसा अभी के मैंने चिकन टिक्का ऑर्डर किया था और इसके साथ ये पालक पनीर तो ठीक है, इट्स ओके, बट जो चिकन टिक्का है ये तो मीठा है, मतलब स्वीट डिश टाइप बिल्कुल, ये तो इसका टेस्ट था। तो वेल ये तो बिल्कुल नहीं खाया गया, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, बल्कि इवन वापस कर दिया, क्योंकि मैंने इवन पूछा है उनसे कि क्या ये वाकई स्वीट डिश है आपके यहाँ। नाउ वेटिंग फॉर अनदर डिश, मे बी अल्लाह करे वो अब जो है ना वो स्वीट ना हो, तो देखते हैं अभी। अच्छा जी, तो अभी ये आया है सामने चिकन टिक्का मसाला जो कि मीठा था, उसकी जगह अभी लेट्स सी अब ये कैसा है। नहीं, मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट वाले कोई पुराना बदला ले रहे हैं हम लोगों से। अभी जो ये चेंज करके लेके आई है डिश, उसमें इतनी मिर्चें डाली हैं उन्होंने, मुझे लगता है कि जो एक दो बार हम लोगों ने कहा कि आप मसाला वाला खाना दें हमें, ये मीठा है, तो उन्होंने सारा मसाले का पैकेट शायद पूरा उसमें डाल दिया। बहुत मिर्चें, बहुत ज़्यादा, अब खाया नहीं जा रही। भाई कभी भी कोई ब्रसेल्स आए इधर ना आए बस। जी गाइस, आज का हो गया ट्रिप ख़त्म और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब बस मैं वो झंडे वाली आंटी का वेट कर रही हूँ, वो भी यहाँ पे आएगी स्टेशन पे। मेन उसने मैं कहा था यहाँ पे 9:30 बजे जमा होना है सबने, तो यहाँ से फिर हम बस में बैठेंगे और वापस जी अपने अपने घर। तो जी चेक करें हमारी झंडे वाली आंटी को, इनका बजट जो है ना बहुत ही कम है। मुझे लगता है जो ये सुबह से वो एक डंडे के ऊपर कपड़ा बांध के फिर रही थी, वो कहीं गिर गया है या कहीं गुम गया है। अब ये छतरी से गुजारा कर रही, छतरी लेके वो उठा के हाथ में पूरे रास्ते में। Going to have much time there, guys, okay? It's just a bonus, a little photo break, and
It's really important that you don't go far away from the bus when we get there, and you take your photos and come back to the bus immediately, because I cannot run behind everyone. तो गाइस अभी हम लोग ये वापसी के रास्ते पे एक जगह पे उतरे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा व्यू है। असल में यहाँ पे एक एटम से रिलेटेड, एक्चुअली में साइंस रिलेटेड म्यूज़ियम है, और उन्होंने उसके लिए एक सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा पीछे ये एटम का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, बड़ा ही कूल था। तो लेकिन इस टाइम पे अब ये क्लोज़ है, ऑफकोर्स शाम का टाइम है, रात का टाइम है, अभी तो ओपन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुक भी रहे हैं कि पिक्चर्स वगैरह बनवा सकें, उसकी पिक्चर ले सकें। काफ़ी कूल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।